أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Now, dear fellows and students and my colleagues and those who are interested to understand the myeloproliferative disorders. Now, this is a subject which I have been taking since last 10 days. And this is myeloproliferative disorders session 4. Because myeloproliferative disorders, they are divided, clinically speaking, into 5. That is acute leukemia, chronic myeloid leukemia, and then we have also see the polycythemia vera rubra, then essential thrombocytosis and myelofibrosis. Today we want to talk something about the series related with the thrombocytes and is progenitor cells, again the stem cell, the exact one. Now it is the totipotent cell, it is differentiated into the pluripotent cell and then multipotent cell, and then the series comes from, that is the megakaryocytes and intermediate products to megakaryocytes, and then megakaryocytes will again divided into thrombocytes. You know about the thrombocytes are concerned, and it is a very hot topic in Karachi at one time when the people don't know about the platelet, Safed Khoon platelet. Safed Khoon is WBC. Paleto wala khoon, that is a possible terminology in relation with the dengue fever. The dengue fever was actually a panic in this city and around the city and in some parts of our country. They know what are the platelets. First time even the laymen know what are platelets, but they don't know the function and the morphology and the origination and the termination, means death of these cells, etc. But you know that you know this condition. Now this is actually a neoplastic disorder related with the series, which is actually responsible for the pluripotent cell dividing into the megakaryoblast, promegakaryoblast. Now this is related with this. So it has neoplastic neoplasia. It will cause hyperplasia and then further it will go on and go on and go on. Relatively, it is a benign disorder. It is a benign disorder, but in some certain circumstances, as I have previously said, that these terminologies, that is acute and leukemia, myeloid or chronic myeloid leukemia, and polycythemia vera rubra, and essential thrombocytosis, and myelofibrosis, the interrelated terminology, they can convert into one to another. Sometimes the gene is the same. The genetic mutation or genetic changes which are the responsibility of these disorders are the same. The one is converting into acute, one is converting into the chronic, etc. So I am Professor Ali Haider talking about this subject. I am visiting professor of internal medicine at JSMU. Essential thrombocytosis is also called essential thrombocythemia, thalassemia, blood, increase number of the blood thrombocyte in the blood, cytosis or thrombocythemia. So it is a clonal disease of the myeloproliferative disorder. Yes, it is a clonal. And persistent elevation of the platelets, according to the American College of Hematology. It is the number which is important. The other understanding of this phenomena of thrombocythemia is not only the number, but the function is very important.
They are not normal platelets. They are abnormal platelets. You know the function of the platelets, you know that. In the normal usual count is in our country is 150 to 450,000 or 400,000. And certainly it is acute phase reactant. Thrombocytes are acute phase reactants, one of it. So in the cases of the inflammatory condition, it will rise up from, for example, from 350,000 to 500,000 or 450,000 or 480,000. It is reactive thrombocytosis, it means that. Or when the hemoglobin drop, the platelet will increase, ESR will increase, because the bone will, marrow will be in stress to work, and it will cause the platelets to rise. So it is said that 1 gram of the hemoglobin reduction will cause at least 35 to 50,000 increment of platelets in most of the conditions. Or any other acute inflammation can cause it. Poorly understood idiopathic. We don't know exactly what happened to it, because underlying disease process is the same. That is, it may be ionic radiation, environmental change, it may be genetic mutations, it may be drugs, it may be anything like this. But I already told you that 3 things are essential for the formation of the metaplasia. Otherwise, the metaplasia will not occur. Genetic mutation plus environmental factors, and plus the clonal changes in the series which you are taking, any neoplasia. If one is missing, then you cannot go to the condition of what is called metaplasia. Metaplasia means you through and through to the anaplasia and dysplasia. So it is a poorly understood, means that exact cause is not known. The persistent elevation of the platelet of more than 600,000, according to the one thought, and another thought is more than 500,000. Even in some countries, more than 400,000 is abnormal count of the platelets. अब इसको डिसाइड करना होगा आपको कि ये जो है ये रिएक्टिव है या ये नॉन रिएक्टिव है, मीन्स दैट इट इज थ्रोम्बोसाइथेमिया है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि काउंट ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनकी काउंट के साथ जो है ना, इनका अंडरलाइंग पैथोलॉजी को आउट करना होगा आपको, यानी मतलब कोई रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस तो नहीं है कहीं ये। इसको दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड करना होगा। पहले आपको काउंट को ले जाना होगा ऊपर, और दूसरा ये कि फिर इट इज़ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन डायग्नोसिस होती है, एक्सक्लूड करना पड़ेगी कंडीशन, फिर ये जाके डायग्नोस होगा। भाई एक आदमी को एक और यानी जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट वे ऑफ डायग्नोसिस है वो ये है कि परसिस्टेंट हो किसी का भी काउंट, और उसको अंडरलाइंग पैथोलॉजी आपको नहीं पता, और मुसलसल वो 2 मंथ या इससे ज़्यादा ड्यूरेशन ले ले, यानी सब एक्यूट हो जाए, तो उस सूरत में भी जो है ना वो कंडीशन जो कहलाएगी वो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया कहलाएगी। लिहाजा आपको 8 वीक्स के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। इफ नो कॉज, idiopathic thrombocythemia are essential. If cause is detected, it is reactive one. The lack of the positive diagnostic criteria, इसने अभी तक कोई diagnostic criteria सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है इसको, कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया है, and it is incidence is 2.5 cases per 100,000। ये जो है ना
केसेस आपको नज़र आते हैं, लेकिन ये यूजुअली पकड़ना मुश्किल हो जाता है इसको. मेल फीमेल रेशियो इज 2:1 and median age of diagnosis is 60. It is geriatric disease. However, 20% cases occur less than 40 years and less than 20 years very rare. The clinical features, what happens is the data are more and more. They are more sticky, more adherent, they are more in number. First thing is this, that because of the clumping phenomena, because of the high viscosity, vasomotor, headache, lightheadedness, even syncope can occur. And because of the blockage of the vessels, terminal arterioles, the burning pain of the hand to the feet associated with the erythema and the warmth, it is also mentioned in polycythemia vera rubra. It was also mentioned erythromelalgia in chronic myeloid leukemia. Depending upon the viscosity of the blood, because the increment of the cellular part of the cellular element of the blood. Transient visual disturbances. For example, the blockage occurs in the main supply. The retinal artery is arising from the ophthalmic artery. Ophthalmic artery or the retinal artery, which is blocked partially or completely for a few minutes, and it comes and go. It is called hemorasis fugax. It may be a spasm or it may be a blockage temporarily. Because platelet इतनी देर तक रहता नहीं है वहाँ पे. वो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन वो ब्लड को काट देता है. या स्किंटलेटिंग स्कोटोमा लोगों को नजर आएगा कि एक साइड लॉस हो गई है, 1/4 ऑफ द विजुअल फील्ड. और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है ना, जब अटैक करता है तो ये स्पैज़म में चले जाता है, जैसे लिखा है ऑक्यूलर माइग्रेन. एक तरफ से तो प्लेटलेट उस पर अटैक कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से वो इन्फ्लेम भी हो रहा होता है, बाद में स्पैज़म में चला जाता है. तो आई की जो सप्लाई है वो जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी थी, वो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है. अब वहाँ पे जो है ना वो हेडेक शुरू हो जाता है, रेट्रो बल्बर जिसे आप कहते हैं, माइग्रेन, ये ऑक्यूलर माइग्रेन कहते हैं. ये कॉमन नहीं है, ठीक है ना, ये अनक्लासिफाइड माइग्रेन में आता है. अब ज़ाहिर है अगर ज़्यादा प्लेटलेट होंगे तो ये दो काम कर सकते हैं. या तो क्लम्प होकर थ्रोम्बोसिस कर दें, या थ्रोम्बोसिस करके ब्लॉक करें, और ब्लॉक करने के बाद उसको रप्चर कर दें वेसल को, तो हेमरेज हो जाएगा. हेमरेज एक तरीके से और हो सकता है कि उनका फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है, लिहाजा प्लेटलेट क्लॉट नहीं बन सकता जैसे, बिकॉज ऑफ दी एबनॉर्मल इसकी क्वालिटेटिव फंक्शन. तो क्वालिटेटिव भी मसला है इसमें, क्वांटिटेटिव भी मसला है. ये कहते हैं कि अगर जो है वो 700,000 से ज़्यादा हो जाए, 200,000 हो जाए, अगर यानी 10,000 हो जाए, 1 मिलियन जिसे आप कहते हैं, तो उस सूरत में जो है 1 लाख, देखिए ना आप इसमें जो है ना, इसमें 1 लाख को अगर 10 तक करें तो 1 मिलियन हो जाएंगे. तो 700,000 to 1 लाख अगर हो जाए, चांसेस थ्रोम्बोसिस के ज़्यादा हैं. और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए, 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन, तो हेमरेज के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ये एक स्टडी है जिसने ये बताया है. तो लिहाजा थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द अदर सीरीज ऑफ द myeloproliferative disorders, chronic myeloid leukemia, polycythemia vera rubra और myelofibrosis. देखें
इसकी सिम्टोमेटोलॉजी जो है ना, इसको इन्होंने कहा कि डिपेंड करता है कि द एरिया विच इज इन्वॉल्व. Coronary vessels, the acute coronary syndrome. Bleeding occurs, nasal bleeding. Stroke occurs, ocular migraine, headaches, ocular. Vertigo, dizziness, giddiness. These are the common features associated with essential thrombocytosis patients. Now this is the sign, erythromelalgia. Redness occurs along with the small papular type of thing you are seeing here. This is the blockage of the vessels and rupture forming this study PTG here. This part is involved. Painful. It is a painful condition. Amaurosis fugax. As I already said, it is supplied by the arteries one, and that is retinal artery. To the retina is concerned. The retina is supplied by the retinal artery, which is the branch of ophthalmic artery. If it is blocked here, something here, then the eyesight is lost. And then it comes back again, because the detached platelet lump is gone. And again the patient will have the same vision as previous, that is called amaurosis fugax. It's a transient phenomenon. Now you have to rule out, that is the diagnostic criteria. To rule out this condition, suggestions were given by the American College of Hematology that the persistent platelet count, A1, means persistent. If its count is persistent for at least 2 months, or more than 500,000. A2 is acquired V617.5 JEC2 mutation, which you have already seen in polycythemia vera rubra and in some cases of the chronic or acute myeloid leukemia also. This is A2, this is a major one. B1, no cause for a reactive thrombocytosis. This is reactive thrombocytosis means there is infection, rebound thrombocytosis, tissue damage, chronic inflammation, malignancy, renal disorders, hemolytic anemia, post-splenectomy, blood loss, and again it will enhance the thrombocytes formation. If you rule out these all, or myelofibrosis should not be there. There should be no myelofibrosis associated with it. Now this is A1, A2 and B1. B1 means no cause of reactive. B1. B2 is no evidence of iron deficiency or stainable iron in the bone marrow or normal red mean corpuscular volume. So no evidence of iron deficiency, because IDA, iron deficiency anemia, will definitely cause, I already said that 1 gram reduction of this iron deficiency anemia will cause 25 to 35,000 increment. There should be no iron deficiency, because more iron is deficient, more are the thrombocytes they will form. You have to exclude this condition. B3 is there is no evidence of polycythemia rubra vera, because it should also cause the increment of the thrombocytes. B4 is that there should be no evidence of the chronic myeloid leukemia, because the transformation can occur with this. But the Philadelphia chromosome may be present in up to 10% of cases. So in 10% of cases, there may be Philadelphia chromosome, that is translocation of 99 and 22 chromosome.
I have already mentioned out it when I was discussing the chronic myeloid leukemia. So this Philadelphia chromosome, because it is important in the initiation of, one is chronic myeloid leukemia in old age, and in children acute lymphocytic leukemia. So this translocation between 9 and 22 is important. Philadelphia chromosome. B5, there should be no evidence of myelofibrosis. B6, there will be no evidence of myelodysplastic syndrome, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था. अगर myelodysplastic syndrome है वो प्री ल्यूकेमिक कंडीशन है, वो कन्वर्ट हो सकती है किसी कंडीशन में भी, इसका कोई पता नहीं. तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम नहीं होना चाहिए. वो तो ज़ाहिर बोन मैरो बायोप्सी करेंगे तो पता चल जाएगा. और फिर ये है कि इसके अंदर जो माइलोडिस्प्लेजिया आप देखते हैं तो उसके अंदर जो आपको रिंग सिलोब्लास्ट एंड रिफ्रैक्टिव एनीमिया, इसकी जो अपनी जो मुआची थी उनमें से कोई भी नहीं होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं. इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. अब किसी का प्लेटलेट ज़्यादा हो गया, वो रो रहा है कि मुझे जो है ना ये डिजीज़ हो गई है, ब्लड कैंसर हो गया फला फलो, तो ये बात बिल्कुल गलत है. पहले आपको रूल आउट करना पड़ेगा, पहले आपको काउंट देखना पड़ेगा. दूसरा जो है ना, आपको जब काउंट आपने देखा उसका ड्यूरेशन देखना होगा, नंबर 2. और थर्ड ये है कि आपको एक्सक्लूड करना होगा ये सारी कॉजेस. अब इसको अगर डायग्नोज बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो इसमें A1 और मैंने ये बताया है आपको, कम से कम जो है ना एक जो है ना ए होना चाहिए, और कम से कम इसमें 2 से 3 जो है ना आपको बी कंपोनेंट, B1 या B2 या B3 जिसको उन्होंने ग्रेड किया है हिस्टोपैथोलॉजिकली, वो होना चाहिए. जैसे कि लिखा हुआ है कि प्लेटलेट काउंट इज मोर देन 600,000 2 month, मैक्रोकेरोसिटिक फाइब्रोप्लेजिया बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, आपको एविडेंस मिल गया. नो कॉज ऑफ रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो एक लंबा चौड़ी बात है कि इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, उसमें भी होता है. एब्सेंस ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, याद रखिएगा. जैक म्यूटेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है. जैक म्यूटेशन इसके अंदर आ रहा है और प्लेटलेट भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर ये ज़ाहिर है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ जाएगा. नॉर्मल ब्लड सेल मास होना चाहिए. हेमाटोक्रेट जो है ना वो बस 48 से ज़्यादा नहीं हो, अदरवाइज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलीसाइथेमिया वीरा रबरा. प्रेजेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन द बोन मैरो एस्पिरेशन, मीन सीरम फेरेटिन लेवल जो है ना वो कम से कम जो है ना नॉर्मल होनी चाहिए. अगर वो लो आ रहे हैं बिल्कुल और उसके साथ थ्रोम्बोसाइट ज़्यादा हैं तो ये रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए इसको आपको एक्सक्लूड करना होगा. There should be no evidence of the myelofibrosis or myelopathic type of myelopathic anemia, etc. There should be no evidence of the myelodysplastic syndrome, जो pre-leukemic disorder होते हैं, उनके साथ भी एसोसिएशन होता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस का. तो पहली बात तो ये है कि इनका काउंट, दूसरी बात ये इनका ड्यूरेशन, और तीसरी बात ये है कि इनमें से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अब फिर ये डायग्नोसिस बन जाएगी. जैसे कि ऊपर से नीचे आप आएंगे कि पहले हुआ उसको, पेशेंट आपके पास आया किसी और को, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको हेडेक हो रहा है, उसको इचिंग हो रही है बिकॉज उसको या तो गाउट हो गया, सेकेंडरी गाउट हो गया वगैरह वगैरह, या उसको चेस्ट पेन हुआ है, वो एक्यूट कॉलेज सिंड्रोम में आया था, मालूम चला काउंट आया 900,000 थ्रोम्बोसाइटोसिस है. इसी तरीके से जो है इरिथ्रोमेलाल्जिया लेके आ गया वो. अब वहाँ पे जाने के बाद वही काम करना पड़ेगा आपको कि आपको इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे जाना होगा. वो इसको जो है ना एलेबोरेट किया है इसी चीज़ को जो मैंने अभी बताया. एंड अप होंगे आप, जाहिर है कि आपको बोन मैरो बायोप्सी बता देगी कि इसके अंदर जो है मैगोकैरियोब्लास्ट या मैगोकैरियोब्लास्ट इमेच्योर जो है वो कितनी तादाद में.
इन एडिशन टू ज़ाहिर है कि कंपेयर करेंगे आप ल्यूकोसाइट का जो लिनेज को और आरबीसी की लिनेज को, इसमें आपको ज़्यादातर जो है ना आपको जो नज़र आएंगे डोमिनेंट वो मेगा कैरियोब्लास्ट नज़र आएंगे। जैक म्यूटेशन अगर आपको मिलती है इसके साथ तो फिर तो कन्फर्मेशन हो जाता है इसका, और ज़ाहिर आरबीसी काउंट नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है, तो फिर देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स डायग्नोसिस। जैसे कि इसमें इन्होंने देखे आप बोन मैरो एस्पिरेट के अंदर इसके अंदर जगह जगह जो है वो मेगा कैरियोब्लास्ट ब्लास्ट है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये लो पावर फील्ड है, हाई पावर फील्ड है, और ज़्यादा इसको आप चलेंगे तो 100,000 पे आप जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर कर देगा सारे मेगा कैरियो ब्लास्ट हैं। अब इसके अंदर आरबीसी की लिनेज या डब्ल्यूबीसी की लिनेज बहुत कम है इसमें। फिर थेरेपी अगर इसको करेंगे अब करना क्या है, डायग्नोसिस हो गई आपकी, बना ली आपने। अब इसमें कैटेगरी देखें, रिस्क कैटेगरी, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें देखें आप इसमें। इसमें जो है ना वो जो आप करते हैं वो क्या करते हैं कि इसके अंदर लो रिस्क के पेशेंट के अंदर जो है ऑप्शनल है, आप एस्प्रिन दे सकते हैं। ये साइटोरेटेटिव थेरेपी जो हाइड्रोक्सीयूरिया है लो रिस्क में नहीं देते, लेकिन ये थेरेपी जो है आप हाई रिस्क पेशेंट में देंगे, इंटरमीडिएट रिस्क में नहीं देंगे, लेकिन आपको एस्प्रिन या क्लोपिडोग्राल दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो बेहतर होगा। इन केसेस ऑफ द रिस्क कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एक्सट्रीम थ्रोम्बोसाइटोसिस के साथ। अब कोई कहेगा जिसमें एंटी कोगुलेंट क्यों नहीं देते, भाई इनसे कोगुलेशन से ताल्लुक नहीं है, ये प्लेटलेट का प्रॉब्लम है। तो उसमें वो क्या करेगा, वो तो कुछ भी नहीं करेगा, आपको तो प्लेटलेट के एडेशन को रोकना है। रिसेंट एडवांसेस में ये है कि आपने हाइड्रोक्सीयूरिया इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप भी इस्तेमाल करते हैं, बाद दफ़ा ये इस्तेमाल करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो है थ्रोम्बोफोरेसिस के रहते हैं कि वो निकाल लेते हैं, वो जिस तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस होता है इस तरह से थ्रोम्बोफोरेसिस भी होता है। बहुत ज़्यादा काउंट हो तो कम करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हर जगह ब्लॉक हो जाएगा। न्यू ड्रग जो आई है इसमें एनाग्लिडाइड और इंटरफेरॉन अल्फा, ये एनाग्लिडाइड जो है ये पॉलीसेसिस में वेरा में भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन असल में ये ड्रग ये बनाई गई थी, ये लो करने के लिए बनाई गई है, थ्रोम्बोसाइट्स को काउंट को लो करने के लिए बनाई गई थी, बहुत रैपिड काउंट लो करती है। एस्प्रिन लो काउंट नहीं करती, एस्प्रिन उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी को रोकती है, साइक्लोऑक्सीजन इनहिबिटर है, वो क्लोपिडोग्राल इसी तरीके से रिसेप्टर इनहिबिटर है। लेकिन एनाग्लिडाइड जो होती है ये बोन मैरो पे एक्ट करती है और मेगा कैरियोब्लास्ट को कम कर देती है। इसी तरह इंटरफेरॉन अल्फा भी है, रिड्यूसिंग करती है प्लेटलेट काउंट थ्रू दी बोन मैरो फॉर्मेशन। बोन मैरो फॉर्मेशन जहाँ से हो रही है वहाँ पे अटैक करती है ड्रग्स। अब एनाग्लिडाइड और इंटरफेरॉन अल्फा तो यहाँ अवेलेबल है कि आप 3 मिलियन यूनिट दे दें आपको थ्राइस अ वीक। एनाग्लिडाइड ओरल ड्रग है, ये अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली ड्रग होती है। अगर आप देखें कि अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स में। अदरवाइज इसमें यह है कि आप एस्प्रिन क्लोपिडोग्राल इसलिए दे दें ताकि उसके अंदर वो प्लेटलेट क्लॉट ना बना सके, बस इसकी वजह और कोई नहीं होती, काउंट कम नहीं करेगा वो। तो ये रिसेंट एडवांसेस हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के, और ये एक डिस्कशन था, ब्रीफ डिस्कशन, इसको अलग करके बताया गया है। भाई इतनी बात याद रखिए कि ये जो है ये डायग्नोसिस एक्सक्लूजन है, ये प्रॉब्लमेटिकल केसेस है, लोग जो हैं वो गलत डायग्नोसिस बना देते हैं क्योंकि एक्सक्लूड नहीं करते हैं वो सेकेंडरी कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोसिस या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस को, इसलिए जो है वो गलत डायग्नोसिस बन जाती है। इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो आपको बताया है, प्लेटलेट के तादाद, नंबर 2 ड्यूरेशन, और नंबर 3 ये एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज।
और प्रेजेंस ऑफ दी, अगर इसके अंदर जो है ना आपको मिल जाता है आयरन डेफिशिएंसी मिल जाती है या स्टेबल आयरन मिल जाता है, तो फिर आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अगर इसको मिल जाता है तो नहीं बना सकते। लेकिन अगर जैक म्यूटेशन मिल जाता है तो उससे डायग्नोसिस बनाने में फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन करने से डेफिनेटली आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर सारी की सारी आप करते हैं, इन्हें इसको आप चांस देते हैं पेशेंट को कि इसका थ्रोम्बोसाइट काउंट कम हो जाए डे बाय डे, नहीं होता, देते हैं फिर हो जाता है, देते हैं फिर हो जाता है। ये ड्रग थेरेपी आप दे रहे हैं लेकिन इसमें काउंट फिर भी बढ़ जाता है, वो पेशेंट हाई रिस्क में जा रहा है। उस सूरत में जो है ना फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा इसमें, या जीन थेरेपी करनी पड़ेगी। आई होप कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट बताया, अलग अलग करके बताया, और कोशिश की है कि इसको क्लियर करूँ फॉर एवरीबडी, फॉर फेलोज और मेंबर्स और स्टूडेंट जो भी है जिनको इंटरेस्ट है। अब ये जो है ना ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, ये बात आपको मैं बता दूँ कि क्लिनिकल हेमाटोलॉजी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लोग इसमें जाते नहीं। FCPS करना चाहिए लोगों को, इसमें क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में लोग जाते नहीं। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी करना चाहिए, इसमें भी बहुत कम है। खासतौर से फीमेल कैंडिडेट FCPS कर रही हैं, अगर वो सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी लेना चाहती हैं तो क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एक अच्छी फील्ड है, उसको उनको लेना चाहिए, बड़ी अच्छी फील्ड। दिस इज वन, और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये क्लिनिशियन होते हैं ये लोग, ये नहीं होते ये जो है ना बैठ के जो है ना वो स्टैटिक नहीं होते। ये डेफिनेटली पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, ये क्लिनिक करते हैं, बाकायदा ये क्लिनिक करते हैं, और इनको ज़ाहिर है कि अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट भी मिलते हैं। इंटरेस्टिंग फील्ड भी है ये बात, अगरचे कि हम खुद ही कर लेते हैं इंटरनल मेडिसिन वाले इसको, लेकिन अगर आप सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी की बात करेंगे तो फिर ये फील्ड बहुत अच्छी रहेगी, आसान रहेगी, और इसमें जो है ना इतनी कम आपको दिमाग भी नहीं मारना पड़ेगा। तो ये एक मेरा मशवरा है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना चाहते माइंड, जैसे मैं रखता हूँ ब्रॉड माइंड। मैं सर को भी देख रहा होता हूँ और इसको भी देख रहा होता हूँ। आप कार्डियोवास्कुलर को बोलेंगे तो मैं कार्डियोवास्कुलर के बारे में बात कर लूँगा, आप न्यूरोलॉजी की बात करेंगे तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, आप कोई भी बात कर लें। तो मुझे तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, तो मैं ऐसी बात कर लेता हूँ। इंटरनल मेडिसिन जो होती है वो इसलिए जो होती है वो बहुत ब्रॉड होती है और उसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। हमारे यहाँ फेलोशिप्स बड़ी चीज़ होती है, फेलोशिप याद रखिएगा, इसके अंदर का रिजल्ट जो होता है बहुत ख़राब होता है। 8 से 10% लोगों पास नहीं कर पाते, बस इतने पास FCPS का होता है इंटरनल मेडिसिन का। ये एवरेज बता रहा हूँ तकरीबन 40 साल का, एवरेज रिजल्ट है 8.5% है, और इसके मुकाबले में ENT का जो रिजल्ट है वो 75% है। और अब अंदाज़ा लगा लें FCPS जो ENT में कर रहा था और FCPS इंटरनल मेडिसिन में कर रहा था, और FCPS सर्जरी का जो रिजल्ट है वो 30 to 40% है, लेकिन इंटरनल मेडिसिन का जो रिजल्ट है 8.5 to 10 है। क्लिनिकल कार्डियोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसका भी बहुत कम है, 12-13% से ज़्यादा नहीं है। जबकि इंटरवेंशनल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, या कार्डियक सर्जरी या इस आगे चले जाए, आप नेफ्रोलॉजी चले जाएँ, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी चले जाएँ, इनका रिजल्ट अच्छे हैं FCPS के, क्योंकि ये लिमिटेड है। मैंने आपसे कहा ना, डर्मेटोलॉजी है, लिमिटेड है, फील्ड लिमिटेड है, उसमें फोकस आपको स्टडी करनी होती है। उम्मीद है कि ये आपको मशवरे और ये सारी बातचीत पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।